got a whole lot simpler because the Delhi to Dehradun getaway is now just a 2.5-hour ride. Prime Minister Narendra Modi has inaugurated the Delhi-Dehradun Economic Corridor today. This project by the National Highways Authority of India is set to transform how thousands of people commute. The 213 kilometers expressway, built at a cost of nearly 12,000 crore rupees, cuts travel time from 6 hours to nearly half. The corridor passes through Delhi, Uttar Pradesh and Uttarakhand. That means faster travel, smoother connectivity and a big push for tourism and business. The corridor also connects to major highways like the Delhi-Mumbai Expressway and the Eastern Peripheral Expressway. ये प्रोजेक्ट भी उत्तराखंड के विकास को नई गति देगा। इस एक्सप्रेसवे का बहुत बड़ा हिस्सा यूपी से होकर गुजरता है। इससे गाजियाबाद, बागपत, बड़ौद, शामली और सहारनपुर जैसे अनेक शहरों को भी बहुत फायदा होगा। टूरिज्म के लिहाज से यह प्रोजेक्ट बहुत अहम है। The Delhi government's support on clearances and urban connectivity has helped ease entry and exit points, cutting down city congestion. The 6-lane elevated Greenfield Expressway begins at Akshardham Temple in East Delhi. An 18-kilometer elevated stretch from Akshardham to the Delhi-UP border is designed to divert thousands of cars away from inner city roads. This will ease traffic on existing routes like the Delhi-Meerut Expressway. Multiple interchanges, including in East Delhi and near the Eastern Peripheral Expressway junction, also allow for smooth entry and exit. This facilitates quicker access for commuters traveling towards Noida, Ghaziabad and beyond. एक ऐसा एक्सप्रेसवे मिला जिसमें 6.5 घंटे की दूरी मात्र 2 से 2.5 घंटे के बीच में तय हो सकती है। ये दिल्ली और देहरादून के बीच की उस दूरी को कम नहीं कर रहा साथियों, ये दिल्ली की आधुनिकता को देवभूमि की आध्यात्मिकता से जोड़ रहा है। This project isn't just about speed, it's also about sustainability. A 12-kilometer elevated wildlife corridor through Rajaji National Park ensures safe animal movement even as traffic flows above. एथिक्स, इकोनॉमी, इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट, ये तीनों हमारे सोसाइटी के महत्वपूर्ण पिलर है। एक तरफ विकास भी करना है और दूसरी ओर इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना है। अभी प्रधानमंत्री जी ने बहुत अच्छे तरीके से निरीक्षण किया है। वहाँ के वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करते हुए हमने ये चिंता की है कि पर्यावरण की रक्षा कैसे हो, इसके लिए अनेक नए नए चीजों का अनुकरण, इनिशिएटिव इस प्रोजेक्ट में हमने लिया है। The Delhi-Dehradun Economic Corridor, which starts right here at Akshardham Temple in East Delhi, is equipped with advanced traffic management systems, over 100 underpasses and multiple overrail bridges to ensure safe travel. Now with faster travel, better connectivity and smarter infrastructure, this corridor comes as a big economic push. Now it remains to be seen how soon it will reshape tourism, business and real estate along this route. In Delhi, Kanishka Sarkar with video journalist Abhishek for WION.